Dear friends, good morning. Happy Chhat Puja. It is my proud privilege to welcome you on behalf of Professor Brahmsingh Horticulture Foundation, BSHF, a not-for-profit organization, and my own behalf to this 5H webinar series, talk number 16. BSHF is thankful to NIPA, New India Publishing Agency, New Delhi, for sponsoring this webinar series. I am happy to welcome co-organizers Dr. Pitam Kalia, ICR Rafi Ahmed Kidwai Awardee, former Head Division of Vegetable Science and Coordinator, School of Horticultural Sciences, ICR IRI New Delhi, and Dr. Shailendra Rajan, former Director, ICR Central Institute of Subtropical Horticulture, Lucknow. Today, the webinar is on water-centric, multi-dimensional approach for the development of Indian horticulture by Professor Mansingh, Project Director, Water Technology Center, ICR IRI, New Delhi. He would formally be introduced by Dr. Pitam Kalia. Friends, you all know horticultural crops, water requirement is obviously high as the produce itself is very rich in water content, leading to short shelf life. Some of them are full of water and are used to quench the thirst, such as coconut and watermelon. On the other hand, water for irrigation being used in huge quantity if you use the flood irrigation. It is gradually becoming scarce. Water is becoming scarce. Climate change, faulty irrigation systems are contributing to this. Modern horticultural production technologies in certain horticultural crops are resorting to hydroponics, where water is the medium for production, not the soil. Professor Mansingh is going to speak on water-centric multi-dimensional approach for advancement of horticulture. Questions can be raised in comment or chat box, which we take up after the talk. Now I request Dr. Pitam Kalia ji for formal introduction of the speaker. Dr. Pitam Kalia. Respected Professor Brahmsingh ji, founder of BSHF, and co-organizer Dr. Shailendra Rajan ji, and today's speaker, none else than Professor Mansingh. Professor Mansingh, who hails from Mirzapur district of Uttar Pradesh, had his graduation in agriculture engineering from University of Allahabad, Master of Technology from IIT Kharagpur, Master of Irrigation Engineering from Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, and doctorate from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. Jawaharlal Nehru awardee for his outstanding doctoral work in field of irrigation and drainage engineering. Dr. Man Singh received IARI Best Teacher Award in 2015. Professor Mansingh had the honor of supervising the research works of several master and doctoral students of IERI New Delhi during his long career spanning over 36 years. He also held the position of head Farm Operations Service Unit of IERI. Professor Singh published over 125 research papers in national and international journals, and presently
He is the senior most serving professor of PG School of IARI and leading the Water Technology Center as the project director since 2017. Professor Singh is serving as a technical expert member to working groups, technical advisory committees of Central Water Commission, National Institute of Hydrology, Roorkee, Wetland Authority of NCT, Delhi, Water Resources Committee of Niti Aayog, RSC and IMC members of Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal. Also, he is a fellow of Institute of Engineers and fellow of Indian Society of Agricultural Engineers. Currently, Professor Singh and his doctoral students are working on climate change impact on crop production, on river basin scale, in addition to publication of concepts of irrigation and drainage engineering in Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and he's leading a water security vertical project as principal investigator under DRIIV that is monitored by the Office of Principal Scientific Advisor to Government of India. Professor Singh has, to his credit, significant R&D contributions in the areas, especially low head drip fertigation technology for vegetable crops production under naturally ventilated greenhouse, development of recurrence interval for moving total rainfall, computer aided irrigation scheduling criteria, modeling of salinization and nitrogen loss via subsurface drainage. As the leader and service function provider, Dr. Singh managed water research as the project director of Water Technology Center, monitoring the academic progress of 35 master and PG students of water science and technology for over a decade as professor of the discipline. And he has also been involved in rehabilitation and rejuvenation of the existing IERI tubewells, augmented the irrigation water supply on the farm and made IRA self-sufficient. So with this significant contributions of Dr. Man Singh, who is going to talk on water-centric multidimensional approach for the advancement of Indian horticulture. Not standing much between the viewers and the speaker, I invite Professor Man Singh to take the floor and give his discourse. Professor Man Singh, please. By your soft and lengthy introduction of mine, indeed, I am very much happy to be on this platform to share my thoughts. I am highly obliged by Dr. Brahm Singh, who contacted me about a month ago for this talk. I readily agreed. I respect him a lot. He is a founder chairperson of BSHF, as has been spoken. Also, I'm really very happy to be in the company of Dr. Kalia, who has been my a guide, as a senior colleague in IRI, and Dr. Shalin Rajan, my friend for the last maybe 37 years or so. We were batchmate in NORM also. So I'm really very happy. Before I proceed, I would like to say a few words about Dr. Brahm Singh. लगभग 11 वर्ष पहले मुझे एक मौका, जब एक्रिप वेजिटेबल साइंस का एक वर्कशॉप था, उसमें कुछ बात करने के लिए मौका दिया था डॉक्टर कालिया एंड हिज टीम ने। तो उसमें हमने अपनी बात रखने के बाद जब मंच से मैं उतरा, उससे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था डॉक्टर ब्रह्म सिंह से। लगभग 11 साल की बात होगी। तो इन्होंने मुझे बधाई दी। वो इवेंट मुझे कुछ अलग सा लगा। अमूमन बधाई देने का
उत्साहित करने का प्रचलन बहुधा जितना होना चाहिए उससे कम हमने पिछले 36 वर्षों में पाया है। तो उसके बाद से शायद मैं पहली बार डॉक्टर ब्रह्म सिंह भी हमें जाने होंगे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब दूसरी बार उन्होंने मुझे संपर्क किया तो इसके लिए मैं पूरे ऑडियंस समूह जिनको मैं नमन करता हूं, जितने लोग भी जुड़े हैं सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मेरे में ये विश्वास जताया, ये भरोसा जताया कि आप मुझे सुनने के लिए आए। और हम इसके लिए भी आपके बहुत आभारी होंगे कि आप जो अपना समय समय आज की तारीख में, आज के समय में बहुत कीमती है, वो समय आप हमें देंगे। अब मैं आना चाहूंगा, एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब डॉक्टर ब्रह्म सिंह साहब को मैंने हाँ कहा तो उसके करीब 4-5 दिन के बाद इन्होंने मुझे कहा कि टॉपिक दो। इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उन दिनों तमिलनाडु के अपने हॉलिडे पे था, अपने सपत्नीक में हॉलिडे पे था और हमें वहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के म्यूजियम जो रामेश्वरम में बना है, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में शायद किया है उनके 2 साल के मरणोपरांत। तो उस पूरे दीर्घा में मैंने डॉक्टर ब्रह्म सिंह की एकमात्र पिक्चर एक कलाम साहब के साथ देखी। तो उसके लिए मैं डॉक्टर ब्रह्म सिंह को बधाई देता हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को उस दीर्घा में किसी न किसी रूप में पाऊं जिनका संबंध एग्रीकल्चरल साइंस से रहा हो, तो वैसा मुझे मिला नहीं। तो इसके लिए भी मैं ब्रह्म सिंह साहब आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः आभार देता हूं कि आपने मौका दिया। टॉपिक की चर्चा जब होने लगी तो कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स हम लोगों ने मिलकर उसको गढ़ा और गढ़ने के बाद आपके सामने ये जो दिख रहा है, वाटर सेंट्रिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। अब हम ये समझते हैं कि इंडियन हॉर्टिकल्चर एक बहुत व्यापक विषय है, व्यापक इसका डोमेन है। अब इसके एडवांसमेंट या इसके डेवलपमेंट या इसके विकास के लिए वो कौन सी चीज है जिससे ये होगा। मैंने ये सोचा कि संभवतः जिस तरह से बिजनेस एज यूजुअल हम कर रहे हैं, अगर उसी तरह रहे जैसे पिछले 70-75 सालों में है, तो हमारी एडवांसमेंट इसी तरह की होगी। और इसलिए हमारी जो भाषण, हमारा जो बात होगा, कुछ बातें हम बहुत प्रोवोकेटिव करने वाले हैं। आप लोग हमें क्षमा करेंगे क्योंकि मैं अगेंस्ट बिजनेस एज यूजुअल के जाने वाला हूं। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मेडिकल डॉक्टर्स ने, पूरे वर्ल्ड के मेडिकल डॉक्टर्स ने, वो लोग उन फैकल्टी, उस इंस्टीट्यूशन में नाम लूं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, बाल्टीमोर, जापान, जर्मनी, यूके, एनी, आप कोई भी नाम लें, अब उनके नोबल लॉरेट्स मेडिकल साइंस के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दी कि मेडिकल साइंस बिना इंजीनियरिंग साइंस के बिल्कुल अधूरी है। मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग साइंस को पूरे डोमेन में अगर आप देखें, उसी तरह की कुछ हम लोग को सोच बनानी होगी। मेरा एक और कहना है इस ओपनिंग रिमार्क में अपने, कि इस भाषण से मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जितने भी ऑडियंस हैं, मिनिमम 1 या मैक्सिमम 3 संदेश जरूर लेके जाएं। इसके लिए मैंने प्रयास किया। हम एक डिस्क्लेमर डालना चाहते हैं कि द स्पीकर इज नॉन एक्सपर्ट, अ स्कॉलर इन लर्निंग फेज, फॉरगिव हिम फॉर हिज इग्नोरेंस। दूसरा है, does understand, the speaker does understand the goal of the nation and its expectation from the scientist employed and paid by the public fund। ये मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं कि देश में जब भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जितनी भी चीजें ये बनाई गई हैं और इनकी सैलरी पब्लिक फंड से दी जाती है, तो क्या हमें सोचना होगा कि क्या ये बनाए गए संस्थान और ह्यूमन रिसोर्स ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, अपने लिए करने के लिए हैं, या उस राज्य, उस रीजन या उस क्षेत्र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं और नेशन बिल्ड करने के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी मैं डिस्क्लेमर डालूंगा
you assume that Mansi is a stranger to the learned audience, and all of you are listening with an open mind. Forget the prejudice, if any, and commit to respect the truth. These are my disclaimer. I became interdisciplinary man immediately after I returned from Israel in 1996. There I spent quite a lot of time, and I met an outstanding horticulture professors, irrigation engineers, soil physicists, crop protection expert, geneticists, etc. etc. हमने वहां देखा कि वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी मोड में करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की प्रॉब्लम के सॉल्व करते हैं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी लास्ट प्रायोरिटी रहती है। इसलिए मेरा ये मानना था कि उसके आने के बाद हो सकता है मैं अपने कदम बढ़ाऊं इंजीनियरिंग का टैग लेकर हॉर्टिकल्चर के लोगों में, तो वो हमें हो सकता है स्वीकारें ना स्वीकारें। लेकिन मैंने एक इंस्पिरेशनल चीज पढ़ी थी उज्जवल पाटनी की, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आपको लगता है कि किसी के सामने जाकर उससे हाथ मिलाकर आप बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो बगैर अपने स्टेटस की परवाह किए उसके पास जरूर जाएं। ये हमने ट्रेट उठाया, लगभग कितने 26 साल हुए होंगे, और हमने ये चीज सीखी कि हमारे मंत्र 3 होने चाहिए। थिंक बिग, स्मार्ट, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट फास्ट। एक्ट फास्ट में हमने 36 वर्षों में जो ऑब्जर्व किया है, वी डिड नॉट डू, हम तेजी से काम करना नहीं चाहते। ये मंत्र जो है ये व्यापक बनाएगा। और हमने टॉपिक में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्यों लिखा है? अगर हम हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह तक ही सीमित रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसका डोमेन इतना बड़ा है कि बिना हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के न धर्म की आस्था का संपादन हो सकता है, न हेल्थ का हो सकता है, न लाइफ का हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अब फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर हेल्थ बहुत डिपेंडेंट हो गई है। तो इसलिए 6 डायमेंशन में क्या होता है, 22 वर्षों में, 2.5 years में, कोरोना के बीच में हमने जो महसूस किया है, जो फील किया है, अब हम देखते हैं ग्रोवर्स, प्रोड्यूसर, फार्मर्स, अब एफपीओस भी आ गए। एफपीओ 10 आदमी से शुरू करके 100 तक पहुंच सकता है। इसमें भी लार्ज होंगे, मीडियम होंगे, स्मॉल होंगे, फ्रेश प्रोड्यूस एट द फार्म ग्रेड करने वाले कुछ होंगे, कुछ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होंगे, प्लांट मतलब संयंत्र उसके फैक्ट्री के आउटलेट पे होंगे, सीड्स, सीडलिंग्स, सैपलिंग्स, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर। ये जितने एलिमेंट इन्वेंट्री हमने डाली है पहले डायमेंशन के अंदर में, अगर बिग थिंकिंग को लेंगे, जो आजकल के यंगस्टर्स जो इस डोमेन में आ रहे हैं, अगर हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है अगले 25-30 साल में हम लोग इरेलीवेंट ना हो जाएं, क्योंकि कोई और करने आ रहा है, क्योंकि यहाँ बिजनेस है। इन सभी एलिमेंट में एक एक बिजनेस मॉडल खड़ा हो सकता है। 10 डायमेंशन, कंज्यूमर, लार्ज बायर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, इनकी संभावना है इस फ्रूट्स में। ऐसा कोई भी, शुरू में मैंने बहुरंगी बोला था, मैंने ये देखा कि आज के टाइम में जब हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो एक प्रिलिमिनरी, पहले हमारे 3 प्राइमरी कलर होते थे, फिर 7 रंग हुए, आजकल 256 कलर है, 256 बाइनरी सिस्टम के जो उसमें आते हैं कलर में, और हम कंप्यूटर पे देखते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का डोमेन ऐसा है जिसमें मैं ये देखता हूं कि उसमें 256 कलर की संभावना है, क्योंकि कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्टर राजन, डॉक्टर कालिया साहब अक्सर एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, इनकी बातें करते रहते हैं। तो ये जो चीज है, ये थर्ड है पॉलिसी मेकर्स एट डिफरेंट लेवल। उसके बाद है मैन पावर, एचआरडी, एडवांस ट्रेनिंग, researchers, trainers, technician, skill development, large pool of crop specific skilled workers and unskilled orchard workers। ये पूरा देखें कि कितना जॉब क्रिएट कर सकता है। इनको हमें हमारी हॉर्टिकल्चरल साइंस की एडवांसमेंट उस गति से होनी चाहिए, उस स्केल पे होनी चाहिए कि वो इतने बड़े डायमेंशन खोले और लोग इसमें काम कर सकें।
इन पे मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी लर्नेड ऑडियंस है। ये लोग हमारी इस हिंट से इसका लंबा मतलब आप लोग लेंगे, मैं जानता हूं। उसके बाद महत्वपूर्ण है फार्म क्रेडिट, फार्म लोन्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स, सब्सिडी रेगुलेटर्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR सपोर्ट फॉर हाईटेक R&D। इसमें हमारे देश में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, I am associated in that drive project and have had interaction with PSA and the Niti Aayog deputy chairman earlier, Professor Rajiv Kumar and others. They are struggling in the meeting. They are saying that the corporates are not coming in big way. There is a breach of suspicion. There is a not at full trust. They feel that if you send money, I do not know whether the output will come or not. But we are all in horticulture domain people. We are parallelly seeing for the last several years, several decades, that the private players in the segment of horticulture, they are, I believe, they are marching ahead than the public institution. I mean, this is, I would like to tell as a naked truth, and many of us admit that. So we have to change our style. And the other one is the middlemen, broker, vendors, transporters. All these people made different kind of amount of money in this corona period. So these dimensions, horticulture has to grow in the periphery of these 6 dimensions. And I am sure that horticulture subject is such a strong and such an important subject for life that it would give a lot of livelihood, jobs, and many more things. Then let us look at the latest data. Kudos to our domain, 342 million tons horticultural production often is claimed. And there are, if you like, take the 2022 year, we are 142 crore population. This the gross production, vegetables and fruits, 660 gram, net 270 gram each. 32 crore population purchasing power. So this I put for all of us to think. We have to also think the middle line, that how many families, even in the higher income group, medium income group, or lower middle income group, and so on and so forth, they are ensuring 365 days, 250 to 300 gram of fruits and vegetables daily, as per the physician or dietitian advice, to make the country healthy and so on. Are we able to target that kind of strategy? What would be our strategy to achieve that? And 32 crore people, I'm afraid that in these 65 days, they would get a chance, maybe occasionally, to have this kind of a thing. The question of malnourished children. Often when we go to listen to various speeches and lectures, presentations, big talks, keynote talks, etc., 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 there people always say that, oh, a lot of malnourished children are in India. 25% of them only in India. और भाई ठीक है, इतनी बार कहने के बाद उसके आगे क्या? हम यही कहते रहेंगे, इनके बारे में सोचेंगे भी. Nutritional security remains unanswered. How? Let's look at. ये मैं एक सैंपल दे रहा हूं कि ये 3 बार में डाइट 250 to 300 gram per day. This fruits, vegetables, which we talk about, color, fruit for good health and resistance and anti-cancer, blah blah, many stories are there. ये हम लोग बताएं कि इस देश में कितने लोग इंश्योर कर पाते होंगे, ये बड़ा सवाल है. हर इंडिविजुअल अपने अपने पूर्वाग्रह से, अपनी अपनी जजमेंट से अलग अलग कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑथेंटिक डाटा शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए डेटा कलेक्शन का काम करना होगा. अगर डेटा कलेक्शन का काम करना होगा, ट्रुथ बोलना होगा, तो ट्रुथ के साथ रहना पड़ेगा. ये एक बहुत बड़ा सवाल है. उसके बाद, are we ready to convey to National Horticulture Board or the National Horticulture Mission? ये 32 करोड़ पॉपुलेशन कितने और साल में 270 ग्राम फ्रूट उनको मिल पाएगा? उनको कब मिल पाएगा? हमारी स्ट्रेटजी क्या है? मेरे इस टॉक में ये assumption निहित है. I presume that
कि हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है, पानी भी बहुत है, लैंड भी बहुत है, डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन भी बहुत है, सब कुछ यहाँ हो सकता है। और जनता तो बहुत ज्यादा है, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ये एक सवाल है हमारे इस टॉक का। एक सवाल ये है कि हम कब कितने साल में इन पुअर लोगों को भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड उपलब्ध करा पाएंगे। हमें याद आता है कि लगभग अब से 50-60 साल पहले हमारे देश में भी लोग जिनकी उम्र उतनी ज्यादा होगी, उस समय भी सब्जी की बहुत कमी होती थी। बहुत उस समय के तत्कालीन टाइम के 60 साल पहले तो लोग बड़े सक्षम रहते होंगे, समृद्ध रहते होंगे, वो शायद रेगुलर 3 बार 2 बार सब्जियां दिन में खा पाते रहे होंगे। लेकिन इन 60 साल में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट और हॉर्टिकल्चर के वॉरियर डॉक्टर ब्रह्मा सिंह साहब जैसे लोग, ढेर सारे लोग हैं, उन लोगों के ही लीडरशिप से काफी आगे बात बढ़ी है। लेकिन हमें इनको भी नहीं भूलना चाहिए। नाउ माल नरिश चिल्ड्रन, मिड डे मील में प्रोविजन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद हो सकता है, वीक में 2 दिन हो सकता है क्या? सवाल। डेली बनाना फॉर इन्फेंट्स ऑफ पुअर फैमिली रिच, जो इन्फेंट्स होते हैं क्या उनको 1-2 बनाना रीजे मिल सकता है? इतनी ये सोचने वाला सवाल है। तभी तो हम अगर हमारे कमिंग जनरेशन जो इन्फेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, अगर वो उनका बिल्टअप, उनका शेपिंग, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो हम सशक्त राष्ट्र होंगे कैसे? हम चैलेंज करते हैं कि हम टॉप 5 इकोनॉमी में आना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनना चाहते हैं। तो हमें ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये कलेक्टिव जो विजडम है, हमें उनको सोचना है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में पीडीएस में अगर याद हो, शुरू में बस गेहूं और चावल मिलता था। हमें याद है जो हम लोग, जो जिन लोगों ने 60s में जन्म लिया है, हमारे जैसे लोग, तो हम लोगों ने वो जो कौन सी सॉर्गम है यूएस की PL 480 की खाए हुए हैं। तो मैं ये पीडीएस में धीरे धीरे अब दाल भी आ गई, तेल भी आ गया वगैरह। तो कब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी वीक में 1-2 बार उन्हें मिल जाए, या महीने में कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, तो वो जो चीज है, यह एक सोचने का एक सवाल मैंने अपना सोचा है, तो इसमें लाया जाए। Why and how water centric? अब मैं वाटर शुरू के ओपनिंग रिमार्क में मिस्टर चेयरमैन डॉक्टर ब्रह्म सिंह साहब ने इसके बारे में थोड़ा बताया था, जिससे सब लोग ओरिएंट हुए हैं। अगर ये मैं बोलूं कि आपसे सीखा है मैंने, हॉर्टिकल्चर के लोगों से मैंने सीखा है, मेजॉरिटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कंटेन 80 to 95% वाटर। जो 342 मिलियन टन हमने बताया था अभी पिछले स्लाइड में, उसमें 274 मिलियन टन को मिलियन लीटर में कहेंगे, व्हाट डेंसिटी वाटर की यूनिटी है 1 है। तो इतना पानी उसमें है। ग्रॉस वाटर, इतना पानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में तब्दील करने के लिए कितना ग्रॉस वाटर लगाना पड़ता है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगली स्लाइड। टेक्नोलॉजी, शुरू में बात कही गई है, उस पहला जो फ्लायर है उसमें टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन लिखा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का ये मैंने पिक्चर बनाया है, जो सरफेस इरिगेशन में, जिसमें डॉक्टर ब्रह्म सिंह साहब ने कहा था कि फ्लड इरिगेशन से कितना करते हैं। यील्ड को बिना कंप्रोमाइज किए हुए प्रेशराइज्ड इरिगेशन ने 50% पानी सेव किया है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से और तमाम डिफिशियंसी, वाटर की स्कैरसिटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर, उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अब लोग इसके बाद की बात कर रहे हैं। एफर्ट ये हो रहा है कि ये येलो कर्व यहां पहुंच जाए, पानी इससे भी कम लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रॉस वाटर यहां तक पहुंचाने में लग रहा है, इसमें कैसे कमी होगी। इस बारीक पॉइंट को समझने के लिए मेरा हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञों से एक दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यहां पर हमें प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और वाटर इंजीनियर्स को शामिल करने की जरूरत होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि जिन राष्ट्र ने ये काम कर लिया है,
चाहे वो नीदरलैंड छोटा सा कंट्री हो, इजराइल बहुत ही छोटा सा कंट्री है, वर्ल्ड मैप पे एक डॉट दिखता है, कोरिया है, चाइना है, कनाडा है, जितने भी हैं, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यूएस है, कनाडा, जितने भी हैं, पेरू है, आपका चिले है, ये सब करते क्या है? इन लोगों ने कुछ किया है, हमें वैसे करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं और अब इससे जो इसको पीछे ले जाना है, यहाँ पे मैं अपने दो वरिष्ठ लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं लेट एस के सिन्हा और लेट वाईसी आर्या का नाम लेना चाहूंगा। वो लोग जब हम यंग डब्ल्यूटीसी में आए थे 86 87 में, तो उस जमाने में प्रोफेसर आर्या और लेट एस के सिन्हा ये लोग वेस्कुलर इरिगेशन की बात करते थे। मैंने अभी रिसेंटली इस भाषण को तैयार करने के लिए मैंने काफी लिटरेचर सर्च की और काफी पढ़ा हमने कि दुनिया में हॉर्टिकल्चर और वाटर के साथ कैसा चल रहा है। तो जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर इरिगेशन की बात उन लोगों ने की थी। सैप फ्लो मैंने लगभग 26 साल पहले बड़े इजीली काम करते हुए जो फ्रूट ट्रीज हैं इजराइलीज को देखा है मैंने। अब उसके आगे ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स, इसमें हमारे राष्ट्र में इस पर भी हॉर्टिकल्चर डोमेन में काम करने की बहुत जरूरत है। ये भी मेरी एक स्लाइड, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जैसा मैंने अपने डिस्क्लेमर में डाला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात सरल भाषा में शायद पहुंच रही होगी। तो हम आते हैं कि हमेशा कोशिश होती है कि मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वाटर, इट इज बीइंग टॉक। ये स्लोगन माननीय मोदी जी ने दिया। उसके पहले इसका रिवर्स, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कोफी अनान ने बहुत साल पहले दी थी, 1998 से पहले दी थी शायद। क्वालिटी ऑफ ड्रॉप इज वेरी, यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि वाटर क्वालिटी जब 96 से 98 के बीच इजरायली आईआरआई में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की स्थापना कर रहे थे, तो उसमें 5 जो उनके बड़े एक्सपर्ट आए थे जिनकी एज 65 से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 65 से 70 साल रही होगी, काफी मेच्योर अनुभवी लोग, उन लोगों ने ये कहा था कि भाई अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में खास तौर से फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल्स में जा रहे हो और ड्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी वाटर क्वालिटी ऐसी हो कि सारा केमिगेशन और फर्टिगेशन करने के बाद भी उस पानी की ईसी 1 डेसीसेमेंस पर मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए जब वो रूट और मीडियम के इंटरफेस पे हो। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ वाटर, हम लोग आईआरआई में सॉइल और वाटर की क्वालिटी पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग वाटर क्वालिटी है उस पे डेमोन्स्ट्रेशन टाइप वाली कुछ ही क्रॉप को दिखा सकते हैं, ज्यादा क्रॉप्स को फ्रूट टाइप्स की क्रॉप में दिखाने की एक लिमिटेशन आती है। इसलिए मैंने इसे अंडरस्कोर किया है। ये अंडरस्कोरिंग हमने काफी पेपर को देखने पढ़ने के बाद साइलेंटली हमने लिखा है। क्वालिटी ऑफ ड्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का ड्रॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। एंड ये चीज देखें कि इसके आगे अब time has come now to think per unit time. That's what the the brilliant breeder of horticultural sciences, they are doing very excellent job कि भाई वो ड्यूरेशन कम कर रहे हैं क्रॉप्स में। लेकिन हम क्योंकि विशेषज्ञ ने, तो मैंने एक लेमैन की तरह कोशिश की कि भाई 45 दिन से 60 दिन से शुरू करना, रेडिस, स्पिनच, कुछ और बातें कर सकते हैं, और उससे लेकर अगर हम वॉलनट तक जाएं तो 15-18 साल तक लगता है जब वो फुल्ली ग्रोथ पे आता है। ये समझने की बात होगी कि फ्रूट्स के साइंसेस के डोमेन में जो अच्छे क्रॉप्स हैं जिनसे हाई वैल्यू मिलता है, उनका जेस्टेशन पीरियड भी ज्यादा होता है। अब क्या है कि हॉर्टिकल्चर में इतने रंग हैं, इतने ऑप्शन है, इतने क्रॉप ड्यूरेशन है, इतना जेस्टेशन पीरियड है, तो इनके लिए वेरीड स्पेसिफिक टीम होकर के वैसा सोचना चाहिए। साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम वॉलनट हुआ, एप्रिकट हुआ, चाहे आपके बिहार में जहाँ पे डॉक्टर ब्रह्म सिंह साहब बहुत पहले लीड कर चुके हैं, हमें भी जाने का मौका मिला था करीब 2017-18 में, तो देखा हमने, तो वहां पे कितनी मुश्किलात से वो ट्रीज खड़े किए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डायमेंशन की कितनी डायमेंशनलिटी बढ़ा रहा है। तो सारे ऑप्शन है किसानों को
पैसे प्राप्त कराने के लिए और कंज्यूमर को सस्ती चीजें उपलब्ध कराने के लिए जो उनके हेल्थ के लिए ऑप्शन है। ये मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो डेल्टा टी हमें चूज करना है कि हम 15 साल वाला क्रॉप ले रहे हैं, 5 साल वाला कर रहे हैं फ्रूट क्रॉप, या 3 साल, या उनमें कुछ और किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं। ये चीज करने के बाद मैंने ये सोचा कि एक कदम आगे बढ़े, मैक्सिमाइज आउटपुट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमने जितनी भी चीजें बात की हैं, हमने पानी की बात की, पर क्रॉप की बात की, वो उनको मैन कौन करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स करता है। वो चाहे साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, फार्मर हो, ग्रोअर हो, टेक्नीशियन हो, लेबर हो, सारे ह्यूमन रिसोर्स। अगर इनका ही आउटपुट मैक्सिमम नहीं हो सकता है तो रिजल्ट जमीन पे बड़ा नहीं आ सकता है। उसके लिए मैंने लिखा है कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, सर्विंग एटीट्यूड टू द नेशन एंड मिनिमाइज द सेल्फ इंटरेस्ट। अगर ये एटीट्यूडनल चेंज होगा तो मुझे लगता है कि जैसे आईटी में बूम आया है, जैसे अन्य एयरवेज में बूम, सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर की दिक्कतें हो रही हैं, मुझे लगता है जिंदगी और हेल्थ का सामंजस्य बनाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसलिए मुझे लगता है अगर सेल्फ इंटरेस्ट हमारे यहाँ कम हो जाएगा तो हम लोग व्यापक काम कर सकते हैं। क्षमा करेंगे, जरा मैं कुछ बूंद पानी पीना चाहूंगा आप लोगों के मुख से। अब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना पड़ेगा। वी मस्ट चेंज, जैसे हम हैं हमें बदलाव करना पड़ेगा एंड गो फॉर ए पैराडाइम शिफ्ट, प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिव कोऑपरेशन। क्रिएटिव कोऑपरेशन का एक एग्जांपल अगर आप देखें, सरदार पटेल का कोऑपरेशन, अमूल जिससे इतना बड़ा चीज बना, ऑपरेशन फ्लड हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, वो एक कोऑपरेशन की चीज है। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कोऑपरेशन और फार्मर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उनका नेटवर्किंग, उनका मार्केट से जुड़ना जोड़ना और सफल होना, एक्सपोर्ट भी करना, ये चीज वहां आई। ये देश लेवल पे पहुंचने की जरूरत है और काफी ज्यादा हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी बढ़ने की जरूरत है। ये कौन बढ़ाएगा मुझे नहीं पता, मैं तो सोचता हूँ और आपने मुझे भाषण देने के लिए बुलाया तो मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं पूरे इत्मीनान और पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि ये चीज साथ मदद करेगी। देन टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विथ इंटेलिजेंस एंड कमिटमेंट, सिनर्जी ऑफ कलेक्टिव विजडम एंड हाई टेक्नोलॉजी एंड एम्पैथिक थिंकिंग। इसको हमें ये सोचना होगा कि हम लोग जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम उन 32 करोड़ जिनको हमने बताया उसमें शामिल है। अगर हम ये एज्यूम कर लें, हम सारी स्टडी, जितने भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट करते हैं, हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, आइडियलाइज्ड कंडीशंस होती हैं, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे है एम्पैथिक थिंकिंग इज एक्चुअली व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। सपोज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मान सिंह एंड द पावर बीपीएल आदमी में, तो उसकी स्थिति में अगर हम डाल जाएंगे अपने को मान के, तब हमें हॉर्टिकल्चर में रिवोल्यूशन आने की कुछ राह दिखेगी। How do we means 6 dimension, we means not only the scientist or horticulturist, no, behave, a quick introspection। ये जो हमने 6 डायमेंशन शुरू में नोट किए थे, आप लोगों ने ध्यान करा होगा, हम कैसे बिहेव करते हैं। ये जो अगली स्लाइड हम देने जा रहे हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको अपने 30, 35, 40, ब्रह्म सिंह साहब का हो सकता है 50 साल से भी ऊपर एक्सपीरियंस हो गया हो, तो ये सोचना होगा अगली स्लाइड में हम क्या कह रहे हैं। हम कोऑपरेशन, रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, डिनायल मोड, अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट, डिफेंसिव कम्युनिकेशन। ये इतना ब्रिटिश रिजीम के बाद से ये जो हमने इनहेरिट कर लिया या अपने इनर्शिया में डाल लिया, इसका रिजल्ट लो ट्रस्ट में आ गया। कल्चर ऑफ, वी हैव क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ लो ट्रस्ट, और जहां पे लो ट्रस्ट होगा कुछ चीज आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 6 डायमेंशन हैं जिनको हमने लिस्ट किया था, उसके ये रेमिफिकेशन हैं, हमें प्रयास करने होंगे नए सिरे से, दूसरी तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लो ट्रस्ट को हमें, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें ट्रस्ट एक्सेस करना पड़ेगा।
हमें जैसे मैं सोच रहा था, 2 दिन से मैं अस्वस्थ था, काफी अस्वस्थ था मैं। तो मैंने ये जानबूझ के निर्णय लिया कि मैं डॉक्टर ब्रह्म सिंह साहब को इसका जिक्र ही नहीं करूंगा, नहीं तो वो मतलब उसके कई और डायमेंशन हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने चुपचाप कहा कि भाई मैं 2 दिन से मैं काफी अस्वस्थ था, लेकिन आज थोड़ा मैं बेटर हूं। तो मैंने ये लो ट्रस्ट को मैं सीखा हूं। मैंने हर आदमी, अगर आप राइट अर्नेस्ट में हो, बिल्कुल पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन फिर भी आपको ये सस्पिशन रहता है कि मैं जो बोलूंगा अगला आदमी विश्वास करेगा या नहीं करेगा, उसको हमें बढ़ाना होगा, और उसको बढ़ाने से ही चीजें बढ़ेंगी। अब हम इस स्लाइड पे, इस पे थोड़ा हम लोग समय देते हैं। हमने ये लिखा है कि एक इंडिविजुअल एम्बिशन, एक कोऑपरेशन एम्बिशन। अभी जो हमारी स्थिति है, अभी जो स्टेटस है, उसमें इंडिविजुअल एम्बिशन बेइंतहा है, खत्म होती ही नहीं, 75 साल बाद भी नहीं खत्म होती। क्यों भाई? मेरा ये कहना है कि यदि हम अपने परिवार में एज ए पिता ये चाहते हैं कि हमारा बेटा 22-23 साल के बाद ब्रिलियंट प्लेस हो जाए और अच्छा काम करे, वो लीड करे, तो भाई प्रोफेशनल प्लेस पे क्यों नहीं? तो मेरा इस स्लाइड पे ये कहना है कि इसे अपसाइड अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल एम्बिशन नीचे चला जाए, कोऑपरेशन एम्बिशन ऊपर आएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, हम लीड कर पाएंगे। एक और भी बात बताना चाहूंगा मैं। मैंने कलाम साहब को भी पढ़ा, हमने महात्मा गांधी को भी बहुत पढ़ा, उनकी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और हमने उज्जवल पाटनी को भी बहुत पढ़ा, और शिव खेरा को भी पढ़ा। इन सब लोगों ने आइडेंटिकल बात कही है। इवन विवेकानंद को भी मैं बात करता हूं, इन लोगों को मैं साइड कर, इन लोगों ने आइडेंटिकल बात ये कही है कि हमें सोसाइटी को सर्व करने के लिए अपने को सेवा के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, कोऑपरेशन मोड में आ जाना चाहिए। और उन लोगों ने ये बात कही कि ये करने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिट सोसाइटी को यही देगा, क्योंकि ये चीज करना अति आवश्यक है। अब कोऑपरेशन एम्बिशन अगर हो कि भाई IRI ऐसे 2 वैरायटी निकालेगा कि जिसका मतलब कोई मुकाबला नहीं होगा, तो प्राइवेट की सारी वैरायटीज से सुपीरियर होगी, चाहे वो कैप्सिकम की हो, चाहे टोमेटो की हो, वगैरह वगैरह। तो इस चीज को, ये स्लाइड पे मैं थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं कि हम लोग इंडिविजुअल एम्बिशन के लिए बहुत परेशान हैं, कोऑपरेशन एम्बिशन से हम आगे बढ़ पाएंगे। Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. Albert Einstein says they are wrong. It is character. When I enumerated the different personalities a few seconds ago, all of them said that for any development, for any leadership, for any problem solving approach or achieving a big goal, attitude to the tune of 85% matters. The knowledge, subject knowledge, doesn't matter more than beyond 15%. So that's what he said. If the character is good, so that means one is siding with the truth. Also, when I interacted with my master's and PhD students for several, maybe 30 years or so, I started teaching in IRI from January 1987, January second semester in those days, trimester those days. So what I learned from my students, I learned from them that we should teach them to distinguish between the truth and false, or true and untrue. We should teach them in the masters and PhD. They should clear cut distinguish between the true and false and true and untrue. And the next step we should teach them is that no matter what happens in their life, they should always side with the truth. Why I'm emphasizing this? Because when we are in research, often the most crisp and precise definition of research is search for the truth. And we have to assess that how many of us are siding with the truth. So let us come back to the horticultural crops. The crop yield ratio, actual yield and intended yield. We say with large area that we have produced a lot of fruit horticultural crops. But we look at the productivity
all of you know much more than what I know. I do not know much, but I would refer Professor Selhevet and Professor Cohen. Lychee, Israel, what they said in those days, that look, Indian and Chinese people, the lychee is native from China, India. You harvest 3 tons, 4 tons per hectare. We harvest 13 tons per hectare. Then I ask a question. What is the secret? Their answer was that we, group of scientists, dictate the tree to grow the way we wish. We dictate the fruit to develop the way we wish. In your country, the fruit and all this grows in its own way. That opened my eyes. So what I want to tell, and then in the previous lecture, when lecture, I got an opportunity by his grace to listen to him on YouTube. I remember Dr. Brahma's presentation, one of the slides with with the apple tree, and Dr. Kalia. It is startling. I mean, but I remember that when I was in Belgium in around 30 years ago, as a student, I read in the newspaper for about 3-4 days continuously that they have been able to produce so much of apple that they are dumping in the sea so that the market price doesn't fall to a threshold level to protect the interest of the farmers in their country. And there is nobody to take from the dock the free, because the transportation cost would be much higher. What I want to tell you is that 30 years ago, because those which Dr. Singh showed in the previous his lecture and Dr. Kalia interjected on that. Do you remember Professor Kalia, what I'm referring to this one? Dr. Kalia? Hello, am I audible? Hello? We Shivani? all are on mute. Shivangi? Nobody will be able to answer you. You are Sorry, sir. audible. Sorry, Kindly sir. go Sorry, ahead. sir. Sorry. Kindly go ahead. Sorry, Others sir. are Sorry. on mute. Sorry, sir. Sorry. So I would talk about on water application irrigation. This cartoon, I mean, after many years of my imagination, what I said, that the vegetation, they remain stationary. Any other microorganism, animal, human being, or etc., they can move to the water, but the plant would need right there. So the only rain, if the rain is so kind that it can irrigate the land throughout its crop growth period, it's okay. Otherwise, we need irrigation. So that this tells that the irrigation is so important in the networking, transportation, actual application, and so on and so forth. So there, this tells the water application here, which I just wanted to, water application irrigation can be understood in a very simplistic way. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पानी को रूट के पास जाना ही होगा, चाहे जो मेथड अप्लाई, और उसी पे सारी इरिगेशन साइंस डेवलप हो रही है. आगे चलें. मेजर फ्लॉज, नो वेयर इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड, नो फेयर प्राइसिंग ऑफ इरिगेशन वाटर, no regulation of groundwater pumping and mining till date. Can we expect higher efficiency of irrigation water use with the human being? Probably not. So 2 major points to ponder: irrigation water economy. We have to focus on this because we have to harvest a lot of horticulture produce. Land drainage and its importance not to be forgotten, because many orchard, tea gardens, coffee gardens, rubber gardens, many other type of gardens which are very high value things, the drainage is a problem there. So we have to have those, and that's what I just wanted to focus this subject. Particularly few years ago, Dr. S.D. Sawant once invited me to Grapes Pune Institute, and he said that the grapes are suffering because of waterlogged condition. I said drainage is needed, and we do not have the adequate implements which can do interculture operation at the base of the creeper, those vineyards and so on. So the drainage is also very important for many crops. I mean, here we see, this is one of our example that if we test for the advancement of any
squares. This was done with the collaboration of the entire multidisciplinary team, led by Dr. Kalia, and my MSc students from Ethiopia. She worked on that. We see that we tried a nursery transplanted squares and the direct seeded in the low tunnel. And we established, we were surprised, we discovered that the direct seeded one performed much better and the nursery one was inferior because it took some time to adapt that local specific situation and the production was unprecedented. So this is just an example, a low cost. And from this kind of, we can see that the kind of data we have to calculate, estimate is that you see that for the same days, the transplanted uh, uh, plants of the summer squares is like this, and direct sown at the site in the low tunnel was much better. And here, this we can see the difference, and we could see the water balance is that the 158 millimeter water was sufficient to harvest a very good Australian squares, and the other one 107 days, and we could get effective rainfall of 146 millimeter. This is another one. We see when we see that in 1996, I got an opportunity. This the picture taken in 1996. This was high cost, high tech greenhouse of Israel, and I saw first time in a soilless culture and production of the squares, yellow squares, and we could translate with the help of Dr. Balaraj Singh, Murtaja Hassan, and others in those days, and we could get in a low cost naturally ventilated in our Indian condition after 15 years. So this was done by one of my PhD students from Sri Lanka who worked, I think, daily 13, 14 hours, 4 to 5 hours daily in the field, 3 hours in the lab, and rest studying the literature. That's what I observed from. And that student is now controlling the import of fertilizer and greenhouse mission in his country, Sri Lanka. That's the kind of human resource development has taken place from IARI. So this is also, here I wanted to tell that every horticultural crop has its very fine skill, and we need to develop a skill like how to lay the drip lateral, how to do pruning, how training and trellising and giving support, and then we can see the changing behavior of the plant, the leaf and fruits. This is the student Nizamuddin. This is 3 generation. Dr. Bhattacharya is my guru, and I just could invite him, and he could find time to see the student work. This was done with the collaboration of Dr. Balaraj Singh, who was in charge in CPCT in those days, and with great assistance of Dr. Murtaja Hassan. Here, the data I wanted to tell about water, that in 6 months in the greenhouse condition, the crop water requirement was 160 millimeter, and per plant per season was 29 millimeter. When we want to harvest red fruits later, so it's about next 2 months, there was 49 liter water per plant per season. And this is how the water demand, it exponentially increases by change of the weather conditions. This is one important data. Now, paradigm shift, fundamental change in the basic concepts and experimental practices of horticultural subject matter are needed. For significant breakthrough in the field of scientific endeavor, break the tradition of old ways of, of thinking is a must. Yes, slide important hai, we have to change. Now, fruit science, here I want to emphasize that let us combine physiological, biochemical, and molecular horticultural one to solve the fruit sciences problem. Fundamental questions regarding fruit trees, how fruit tree grows, how each fruit should develop, and practical questions of productivity and quality. This is a major question. Here we are lagging behind. Observation about the fruit tree. 60% of Indian orchard produce inferior fruit and low yield. Orchards too old to produce quality and quantity. Often orchards outlived their life or they have become senile, and very low wages
offer for the uproot an old tree fails to motivate, we need mechanization. This is an example how the senile orchard tree is being uprooted by with the help of machine, and how the new grafts are being placed here so that it goes faster. And mechanization, massive drive for uprooting senile trees needed, an alternate source of livelihood to be thought for a farmer's gestation period. Some valid questions. Can we bring additional area under horticulture crops after Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? Sawal hai. Could enhance the quality of produce without irrigation and drainage facility. Then this kind of land, with the help of this water and drip, we can produce vegetable crops, and we can wet the portion of the area and produce such kind of crops. Hilly region is giving a scope, because the potential land for organic cultivation and natural farming, there is a talk on this at the highest level in this country. So the we scientists also should think, where is the domain, where is the feasible space where we can go for such kind of a thing. In hilly region is a scope. Now here I thought some of the forgotten, I mean not much focused, I feel research and multiplication on very large scale, gooseberry, amla, tamarind, moringa, butter tree, mahua, bale and jamun, and IoT की बात आजकल हम बहुत सुनते हैं. Internet of Things, this was given by artificial intelligence and people, but in the crop it should be Internet of tomato, Internet of capsicum, Internet, so that the sensor can send the signal to the grower what should be the TSS, at what stage it is ripe, when it's to harvest, and things like that. So we have to slowly go on Internet of Things. Things will be replaced by some crop of the horticulture. Export scene, we can see top 5 tomato. We are not there. Mexico, Netherlands, Spain. This I just took for us to take the inspiration. Tomato में हम नहीं export, हम लीची और grapes में भी नहीं है. कनाडा, थाईलैंड, पोलैंड, पेरू, ग्रेप्स में भी हम नहीं है, रोज में भी हम नहीं है. हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट से भी ज्यादा पैसा आने की संभावना है. So be inclusive and not exclusive. Here is a point. Researchers may seriously think and devise a mechanism to attract talent from diverse backgrounds and take care not to encourage inbreeding. Inbreeding is malignant and killing whole lot of things. You learned people can fill the gap. Now, this is a very important point I wanted to say. Name any profession, beginning from the politics, law, science, technology, engineering, and mathematics, arts, fine arts, humanities, languages, literature, cinema, etc., etc. Of these, the second generations do opt for higher education or career in the same profession as their respective parents. The stream of the agricultural science is an exception. Why? We need to answer truthfully and unambiguously. Farming profession is to, कोई भी किसान अगली पीढ़ी को किसान नहीं बनाना चाहता. ये बहुत पहले माननीय लेट चौधरी चरण सिंह जी, जो बहुत बड़े मास लीडर थे, उन्होंने बहुत पहले ये कही थी. उन्होंने एक बात और भी कही थी बहुत पहले, चौधरी चरण सिंह जी ने, कि इंटरकास्ट मैरिजेस से बहुत फायदा होगा देश में, लेकिन वो भी अभी पेंडिंग है. Here, vision and submission, long-term investment for long-term gain as compared to the short-term measures. Indian rupees 3.5 to 8 lakh crore investment होना चाहिए इस डायमेंशन के लिए. ये चाहे वो हमारे 4G, 5G के इन्वेस्टमेंट्स होते हो और ढेर सारे, ये चूंकि हेल्थ और जीवन से लेना देना है, हॉर्टिकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए. तो इसलिए अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने कार्टून वाला बनाया था कि वैसा नेटवर्क होगा कि अगर पानी पहुंचा देंगे तो हॉर्टिकल्चर में बूम आएगा ही आएगा. Horticulture professionals may think of intercaste marriage for its advancement. And thank you so much. This is Center for Water Literacy. अब गांव-गांव में विभिन्न एरियाज में लोग वाटर लिटरेसी की बात कर रहे हैं. क्रेडिट इस धान फाउंडेशन का एक फंक्शन था जिसमें मैंने भाग लिया. मैं आप सभी लोगों को अपनी बात पूरी कर रहा हूँ. आई एम रियली very much thankful to all of you. Thank you so much, sir, for giving me an opportunity. मुझे क्षमा कर दें अगर मैं कर गया.
मान सिंह जी, जितना थैंक्स आप दे रहे हैं उससे कई गुना थैंक्स हम आपको देना चाहेंगे आपके लेक्चर के लिए, और एक बार नहीं देना चाहेंगे, बार बार देना चाहेंगे। तो अभी मैं राजन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो थोड़ा मॉडरेशन पे थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि हिंदी ठीक बोली है तो ठीक है, नहीं तो भाई जो ठीक समझते हो करो। धन्यवाद, thank you sir very much, and we had a very comprehensive lecture, although it was Thank you so quite much. different Thank you from so much. others. It was entirely different, but a multi-dimensional approach he has explained to us in many ways, and stressed many of the points which are required, particularly the multidisciplinary approach for solving the problems. उनका जो कहना था वो बिल्कुल नई नई बातों को उन्होंने हम लोग को प्रेषित किया, और उनके प्रेजेंटेशन से जो लगा वो कैसे हम वाटर मैनेजमेंट भी करें वो होलिस्टिक होना चाहिए, एक सिंपल यूनि डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। कैसे सप्लाई चेन जो है पॉलिसीज और सब चीजें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, और उन्होंने डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको फ्लैग किया, पर्टिकुलरली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड रिसोर्सेज वाले जो हमारा पॉपुलेशन का पार्ट है, जो हम लोग के जो लोग हैं जो इसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनको भी कैसे अवेलेबल हो, ये मेन मुद्दा था। और उसके लिए उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया वाटर रिक्वायरमेंट के साथ, कैसे वे वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हम ये अचीव कर सकते हैं। और उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था, जो उन्होंने बड़े सिंपल कैसे प्रेस्क्राइज इरिगेशन जो है 50% में ही इनपुट पर ही आपको सेम यील्ड दे सकती है, जैसा कि हम दिस सरफेस इरिगेशन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक दो चीज और फ्लैग की, जैसे सैप फ्लो मेजरमेंट, उसका रोल, और जो चीजें आमतौर पर फ्रूट ट्रीज में तो काफी इस्तेमाल की गई हैं, बाहर काफी की गई हैं इसराइल वगैरह में, उनका उपयोग करके हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने स्ट्रेस दिया। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली, जुवेनाइल पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्टिकुलरली फ्रूट ट्रीज के लिए, जिसमें उन्होंने बताया, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से पुरानी नॉलेज हो सकती है, इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो जुवेनाइल फेज है बहुत कम हो गया। इवन जो वॉलनट्स थे पहले सीडलिंग्स होते थे, अब ग्राफ्ट्स होके बहुत कम टाइम पर ही फ्रूटिंग में आ जाते हैं। तो हमको दूसरे तरह से सोचना है, और हमारा इंटेंसिव होगा ये, और एक नया डायरेक्शन देता है कैसे वाटर मैनेजमेंट को देखना है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि वाटर मैनेजमेंट कम होता है हमारा कुछ जुवेनाइल पीरियड। जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा जामुन का। जामुन पहले 7-8 साल में फलता था, तो प्लांटेड प्लांट्स जो है छोटे साइज है, छोटी कैनोपी है, उसका वाटर यूज भी कम है, और वो 4-5 साल में फलने लगता है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और उसके साथ ही अगर हम इरिगेशन को कंबाइन करेंगे, जैसा कि आप बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। फिर आपने सजेशन दिया कैसे मैक्सिमाइज करें अपने आउटपुट को, और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्विंग हो, और पैराडाइम शिफ्ट करके आना चाहिए। उन्होंने मेरे को उनकी पूरे उससे यही ज्ञात हुआ, वो हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन जब पुअर के लिए भी हो जाएगा तभी उसको हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन मानेंगे। और दूसरा उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया कि द कल्चर ऑफ ट्रस्ट, एंड दैट शुड बी लो जो ट्रस्ट है, how to eliminate it, then only the further development can take place, and the multidisciplinary actions will be only possible and viable after that stage. ये उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी है। Then performance of horticulture crop, उन्होंने ये बताया कि they dictate the tree. In other countries, Israelis that we dictate the tree how it has to behave, but here in India we have an entirely different way. We are not dictating the tree. But until unless we control all the facets, starting from the phenology, starting from the absorption of the water, nutrient, everything, when we have the holistic approach for the understanding, तभी आगे जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे नए तरीके अपनाने पड़ेंगे जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को सजेस्ट किए हैं, और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को हम लोग बहुत ही अनदेखा करते हैं आमतौर पे, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। बार बार उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करने को कहा है, वो खाली हायर यील्ड के लिए नहीं है, बट क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मैं आपको ये मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस तरह के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस क्षेत्र में भी, पार्शियल इरिगेशन में, फर्टिगेशन में, और बहुत सारे नियमित रूप से
लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग इनिशियल फेजेस में थे। आप लोग तो बिल्कुल एडवांस सर्जरी वाले एरिया में थे, लेकिन दूसरे भी आपसे सीखा है। दूसरे लोग कंपाउंडर की तरह थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर को नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे अगर आप उनके टच में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके रिसर्च प्रोग्राम्स ज़्यादा अच्छे होंगे। रिसर्च प्रोग्राम तभी अवेलेबल होगा जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अपने पेपर रिसर्च पेपर या इनसे रिलेटेड नहीं हो। ये आपका कहना था। उन्होंने कुछ और कहा, क्रॉप जैसे आंवला से लेके जामुन तक एक लिस्ट थी। अब बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है इसमें। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन सारे क्रॉप्स में काफ़ी कुछ वर्क हुआ है, और दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया इन क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर। दूसरा, आईओटी को भी नहीं छोड़ा आपने, उसको भी टच करके हमको उससे जोड़ दिया। तो इन कंक्लूजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और दूसरा निराले तरह का लेक्चर था, जिसको कि समझने के साथ साथ हम लोग को समझना जरूरी है किसी भी रिसर्च एरिया में कैसे आगे हम लोग आगे बढ़ें, और इस लेक्चर से हमको इसकी प्रेरणा मिलती है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मान सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें इस तरह के जो उन्होंने निश्चित किए विचार, उनसे हम लोग सभी लाभान्वित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Peetam Kalia ji would like to supplement. डॉक्टर साहब, आपकी वो आवाज नहीं अनम्यूट आप करिए। अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट। It got Yes. muted automatically, I think. I think the moderation was done excellently well, covering every corner of the lecture. But still, because it's a diverse type of lecture, not in a traditional way as usual to Dr. Man Singh, when he climbs onto the dais, also in IRE, many times he starts speaking differently than from the lecture which people expect from. And at end of the day, everybody starts clapping because it's different. It's not a routine type of lecture. So diversity that has been seen in the lecture, I think viewers must have been benefited from that. There are certain points which are very important as from human resource development point of view. That point he has very intelligently touched. Midday meal with the fruits and vegetables has to be taken up to end the malnutrition of children. All these things are there already, but I think holistically from all these points which has been touched, they are somewhere there already. But we are not able to bring public awareness in a right way, as our people are doing what they see right from childhood. So from the childhood, changing the mental set of our people, that is not there. Because when we Indians go outside the country, then we follow the things what others do. But when we land back at Delhi, we start throwing garbage on the ground because it's our own home and we can throw it there. But in others' land, we don't do it. So those are the aspects. I think I found when I was doing my this postdoc, I used to visit different places and see what people are doing and how they are educating. So the young mothers, I found they are used to smack the toddlers on their back, not to throw anything on the ground at that point of time. But when one of my English friend took me on a ride on weekend, then we are moving, and in the meantime, a Punjabi car passed through in London, and then they threw some paper through the window. And the English friend told me that, sarcastically, that you must be feeling now in Punjab. So that point was very much embarrassing for me to learn. So those are the things which Dr. Man Singh has tried to talk about. But I think we need to take holistic public awareness from that point, which is very important, and guide people in a righter way. One of the important point which he mentioned that guiding of the students. I know that at IRA also,
So when the students are studying, because they have to gain good grade point and at end of the day some medal and something like that, they try to burn midnight lamp. But once they have qualified ARS or IAS or any other jobs and they are in the job, then they also try to spread their legs on the table. So that is the crux of the problem in our country, that to get a job, we put every efforts to get it by hook or crook. But once we get it, then we forget now we are safe and we need not work. So how the country can advance in different sectors, that Dr. Man Singh has tried to touch upon these areas. And quality of water, which is very important to irrigate the horticultural crops, as he mentioned that in 342 million tons of horticulture crops, 274 million liter is water. So we know that 90 to 95% most of the crops are water we are taking, but that water which we take through these crops, that is what which enhances our thinking skill, which enhances our body strength. That's very important. But as far as the production is concerned, the availability, there is no dearth now. 342 million, you said, and every nook and corner when we move out of our house is every street is full of fruits and vegetables. Ready walas are carrying here and there. But from consumption point of view, the rural people especially and others, because age old, they are adapted towards taking 10 chapatis and taking it with pickle and just onion. They are not divulging from that, and maybe many of the production that the farmers are doing and the scientists who has put efforts in doing that, they may not be going in the right track. So there are other things which are involved, which needs to be taken up from various ways, so that ultimately people move. They try to diverse their diet, diverse. Multi-centric diet has to be important. Various inputs of different horticulture crops and others has to go into that, so that the we see tomorrow healthy people, and they try to manage their health through fruits and vegetables or their diet, which is very important factor as I find. And the availability from the population point of view, that Dr. Man Singh has mentioned, that when 32 crore population will get that, from availability point of view, there is no dearth. There is no dearth, I am saying. But when they take that, we need to guide people that they should try to take these vegetables, include vegetables or fruits most in their diet, and try to reduce the consumption of cereals as far as possible to stay healthy. So I think with that, and also the minimizing of self-interest and working for the nation, which is very important. And we know generally everybody talks about only 10% of people are working, due to them we are flourishing. 90% are sleeping. Had they been working, the country would have been on the top of the world. So that funda has to go into, and with that sort of messages given by Dr. Man Singh, we must thank him for the excellent talk that we have had. I think a lot of motivational lecture we had. Thank you very much. Thank you, Dr. Kalia. You said it. Motivational lecture. Yes, it was a motivational lecture. And Dr. Man Singh, lot of appreciation. I must congratulate you. Lot of appreciation and comments. And there is no question. Means your lecture was as clear as possible. Everything was crystal clear. No question at all. Only the good comments, appreciation. I must congratulate you. And you have rightly said so many things which are eye opener, and we horticulturists should take note of it. Something he talked about is a collective approach. It's not that horticulturists can solve all the problems. What are the things related with that? We may have a better knowledge of the plant, but irrigation, yes, irrigation person has to help us, and we should take the help of the irrigation person. Likewise, the fertilizer and all that, and that's what we are doing religiously these days. Horticulturists
They are doing it in most of the project. All experts are there, not so prominently as Dr. Mansingh had talked about the example of Israel. Yes, he says, uh, according to him, though I'm not very comfortable with this statement, that the scientists dictate the crop to yield. Yes, scientists try their level best to take what they want, but dictation to a crop, I think, is a subjective matter. Subjective matter in the sense it is affected by so many factors. Number of things are there, and the basic and the fundamental thing is the genotype, the genetic constitution of a plant. If suppose that is lacking, any amount of dictation won't work. Otherwise, the dictation in natural farming, which is coming up, perhaps may not work. Perhaps may not work. That dictation, because the producing capability of a genotype, what the plant breeder and geneticists understand, it has got limitation. On its own, it doesn't express until unless you do the intervention and do some alteration, desirable alteration, etc. We don't get the dictated thing from that. Anyway, I may be excused, I may be wrong also saying that, but it's a collective approach, and the dimensions which I said, he talked about is good, but I want to give a task to Mansingh. I'm taking a liberty. I'm taking a liberty. I don't need the answer here. He can think over. He can just tell me or share with Rajan or Dr. Kalia anytime whether plants yield water, whether they produce, what are the quantity of irrigation we are giving to a plant, whether some of the plants are giving much more than what we are supplying to them. This is my question, and I think involved in it since a number of years, and I don't know, I could not make much headway in that. An example in my introductory remark, I have given indication of watermelon and coconut. So with these words, I thank speaker profusely for giving a talk in a different way, in a way that it is understandable to everyone, every viewer, and that is the, I think, beauty. And he has worked hard to prepare this, because talk in such a manner, the speaker has to work hard to convey the things. He has to think in so many ways, and he has to put himself as a viewer, and then frame the talk. So he has worked hard. Congratulations to Dr. Mansingh ji. Nice of you. It was something very interesting. Everybody has appreciated. And I'm thankful to my colleagues, Dr. Rajan, Dr. Kalia, Miss Shivangi, for putting up a good show as usual. And we meet next Sunday again. Next Sunday with the topic of technology for future fruit production. And Dr. Rajan will be speaking on the topic as usual. So till then, goodbye and bye-bye. Thank you so much, everybody. Bye. Thank you, sir.